वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक एसे के बारे में जिसका नाम है फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट। ये है बाय रोलैंड बार्थ्स के बारे में एंड इट्स एक्सप्लेन्ड सिंपली लाइक द डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड वर्ड। This distinction reshape how we read, interpret, and experience literature, philosophy, and art. So let me start. A physical object like a book, a painting, a symphony is fixed. Okay, it is fixed, it is closed, and it is owned. Whereas if I talk about text, it's a process, a field of meaning, हजार चीज़ें लिखी हुई। ओके, अ प्ले ऑफ लैंग्वेज, ओपन, पार्टिसिपेटोरी, डायनामिक। ओके, सो participatory and dynamic. देन अगर हम बात करें इसके लाइक थोड़ा अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें, सो द वर्क कम्स आउट हेयर एंड टेक्स्ट कम्स आउट हेयर. Okay, so this is called as criteria. Okay, so if I talk about form is material. For example, मटीरियल हो सकता है बुक स्लैश पेंटिंग. ठीक है, उसके बाद अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो ये होता है कंसेप्चुअल. ये होता है कंसेप्चुअल स्लैश प्रोसेसुअल, मतलब filled with process because meaning keeps on changing as Derrida said in deconstruction. स्टेटस. सो स्टेटस का मतलब है कि फिनिश्ड एंड कंप्लीट, जिसका मतलब है कि ये अपने आप में ही ख़त्म होता है, फिनिश्ड होता है स्लैश वर्क. या सो दिस इज़ कंप्लीट, अपने आप में ही ये कंप्लीट होता है और फिनिश होता है. अगर हम बात करें इसकी, टेक्स्ट जो होगा वो इन मोशन में होगा, मतलब वो आगे बढ़ रहा है ऐसे कुछ समथिंग. ठीक है, नेवर फुली कंप्लीट बिकॉज मीनिंग कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, देन इफ आई टॉक अबाउट अथॉरिटी, अगर हम अथॉरिटी की बात करें, सो ऑथर सेंटर्ड. ठीक है, ऑथर के सेंटर में होगा रीडर सेंटर्ड. रीडर सेंटर्ड की पूरा का पूरा लाइक रीडर जो है, रीडर के हाथ में डोर होगी, वो इसको अपने हिसाब से बनाएगा, करेगा. ठीक है, वही चीज़ करेगा. देन रीडर जो होता है अथॉरिटी, वो सिर्फ और सिर्फ ऑथर के हाथ में नहीं होती, रीडर के हाथ में भी होती है. अगर हम बात करें मीनिंग की, तो इसका जो वर्क का जो मीनिंग होता है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड. ठीक है, एंड यूनिफाइड. इसका मतलब है कि फिक्स होता है एंड मतलब जो मीनिंग है वही है. अगर हम बात करें यूनिफिकेशन की, तो एक ही तरह से वो दिखाया जाएगा या एक ही तरह का होता है. इफ़ आई टॉक अबाउट टेक्स्ट, सो टेक्स्ट हैज़ मल्टीपल, आप आर्टिकुलेट करके अपने हिसाब से, एंटिसिपेट करके अपने हिसाब से मीनिंग जो है आप बना सकते हो, और ओपन एंडेड होता है. ठीक है, यू कैन प्ले विद दिस, यू कैन मेक एनीथिंग विच वट एवर यू वॉन्ट. आपका दिमाग है, जो मर्जी सोच लो. ठीक है, you can connect dots from any topic to any subject to any domain. This is the beauty of text. That's why reading fiction feels so pleasurable as compared to reading non-fiction.
Next, if I talk about is consumption. Consumption is रीड पैसिवली. आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आर्ट पीस देखते हो तो आप या कुछ भी आप बुक देखोगे या कुछ देखोगे, ठीक है, ये आप पेंटिंग देखोगे तो पैसिवली कंज्यूम करते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल वीडियो देख ली, कोई कुछ बोल रहा है, वन साइडेड गेम है. वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट टेक्सचुअल कंटेंट, इट्स अ प्लेफुल, यू कैन प्ले विद द वर्ड्स, मेक मीनिंग एज पर योर स्टाइल. इसलिए कमरे में बैठे हुए लोग डिप्रेस और ओवर थिंक इसलिए करने लग पड़ते हैं क्योंकि वो इनको पता नहीं चलता कि दिमाग कैसे काम करता है, एंड हाउ thinking about something can trigger something negative in your head. Okay, next. uh, Next comes the genre. genre की बात करें, कैटेगराइज होता है. कैटेगराइज्ड, कैटेगराइज का मतलब है कि इसमें आएगा नॉवेल्स, पोएम्स. अगर इसमें हम बोलें ये एंटी जॉनर होता है, break boundaries. And the best thing about UPSC exam is that it's made for breaking boundaries. It's not confined to any framework or any frame. It appreciates the nine dot problem. It encourages you to go beyond the subject and live and study out of the domain. For example, uh, if I talk about the work of Dostoevsky, so it talks about really he's a nihilist guy, somewhat has no meaning. Okay, so then you can connect it with the with maybe a paper on your notebook that it also has no meaning. It was made by just from the tree by cutting the tree, okay, and bind it up into the notebook. Okay, so it is anti-genre, anti anti-genre. Then comes the interpretation. इंटरप्रिटेशन का मतलब है सीक ट्रूथ और मीनिंग, ठीक है. इसका मतलब है सीक ट्रूथ और मीनिंग और मैसेज. इसका मतलब ये है कि इट सीक सच्चाई की तरफ जाता है. इट सीक ट्रुथ और मीनिंग, वेयर एज इट सीक्स मल्टीप्लिसिटी. ये फटाफट कोई ना कोई मीनिंग निकालने की कोशिश करेगा. वेयर एज अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशन की, तो ये प्लेफुल होता है, मज़ा आता है खेलने का with words, with text. So let me tell you a really interesting thing. If you don't like studying, if you think it's really passive, it means you are not connecting the dots. The main purpose of education is to connect the dots with combining and breaking boundaries, connecting different subject, whether it's philosophy or maybe Hindi literature or any. Okay, so the more you read, the more you connect, the more you grow. So that's how you expand your brain or mind somehow. So next is ownership. So ownership, if we talk about ownership, it's institutional. Institutionals means music, schools, any like DC office or something like that. It is if we talk about uh, text, so it is democratic, it is anarchic, okay, in nature. Then if I talk about function,
Okay, so if we talk about function, so it is consumed, take it directly, consumed, it is consumed. Next come the it preserved. Okay, if I talk about this, it is performed, it is reinvented. Okay, if I talk about language, if I talk about language, language used out here is transparent, it is serves serves meaning. Next is self-aware, it is language as play, it is called language as a play. So transparent, if I talk about later on, okay, theoretical core, Barthes moved from structuralism to post-structuralism, argues that a work belongs to the realm of culture, कि जो काम है, work belongs to the realm of culture, tradition, the author. Okay, so if about the talk about the text, so text is more belongs to the realm of language, play, reader. It is more of a feminine, whereas it's more of a masculine side. Um, it leads to somewhere statehood. Okay, authoritative, right wing, whereas it is more of like a dance. You participate, you indulge. Uh, it's like a share, it's like two guys having a single meal, it's like having a one coffee with your partner, it's like recreating, it's like birth, it's like giving origin to something new, it's like giving birth to something which is not present in this world. uh, and it's really creative. Okay, so he famously says the text is not to be thought as an object that can be computed, that can be computed. Okay, so that is equals to computed. uh, it would be futile to try to separate out material work from text. Now if I talk about implications, the reader becomes a creator in the text. Okay, this is text, this is work. So out here reader become a creator, author becomes decentered, no sign truth, only interpretative plurality. Out here text is experienced. Okay, meaning is co-produced. Reader play text like
Text like game or puzzle. Out here, author is dead. Interpretation is never closed. Okay. Now, if I try to give you and explain with example, और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये वर्क है, ये टेक्स्ट है. तो अगर हम नॉवल की बात करें, सो अ प्रिंटेड बुक ओन्ड एंड कॉपीराइटेड. ठीक है. द वर्ड ऑफ मीनिंग दैट अ रीडर शेप ईच टाइम दे रीड. एक बुक है, वो प्रिंट हुई हुई है, ओन्ड है, किसी ने ख़रीद ली है, या फिर वो कॉपीराइटेड है. ठीक है. तो पर इसमें ये है कि इट्स लाइक इंजॉइंग. ऐसे समझो कि यू आर द को ऑथर इन दिस बुक. ओके. सो you participate in this. Okay. Then comes poem. A painting is hung in the museum, studied historically, interpreted by emotions. अगर हम इसकी बात करें तो ये है interpreted by, हम अपने emotions इन्वॉल्व कर देते हैं, पॉलिटिक्स, मेमोरी, जेंडर एक्सेट्रा, 100 चीज़ें मिला के 1000 तरह के डोमेन्स को इंटरकनेक्ट करके कुछ ना कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं. अगर हम बात करें अ पोएम, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें पोएम की, तो इट्स मेमोराइज्ड एंड रिसाइटेड. आप पोएम को याद करते हो, उसको रिसाइट करते हो. वेयर एज if I talk about the text, it is disrupted by new beginnings, disrupted by new readings. It is disrupted by new readings. Okay. And deconstruction. For example, if I try to break it down, the text is has 6 features. Okay. Not an object but a mythology. ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, एक माइथोलॉजी की तरह है. ठीक है. नॉट कंटेंड अ हायरार्की. फॉर एग्जांपल लिटरेचर है, नॉन लिटरेचर है, मैस्कुलिन फीमेलिन है. ऑब्जेक्टिविटी है कि ऑब्जेक्टिविटी में भी फिर हायरार्की है. ठीक है. इट इज़ लिंक्ड टू दी प्लेजर. जोआंसेस अ सेंसुअल लैंग्वेज बेस्ड एक्सपीरियंस. प्लेजर कि मज़ा आता है भाई. जोयांस. ठीक है. इट इज़ जोयांस अ सेंसुअल लैंग्वेज बेस्ड एक्सपीरियंस. ओके. प्लूरल वूवन विद मल्टीपल कोड ऑफ मीनिंग. रीडरली प्रोड्यूस्ड, मतलब रीडर जो है वही मदर बन जाती है इसमें. रीडर बिकम्स द मदर. रीडर इक्वल्स टू मदर. ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि भाई आप ही कुछ रिक्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में. मीनिंग इमर्जेस ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ रीडिंग. आप द फैक्ट इज़ दैट यू आर रीडिंग, इट इज़ क्रिएटिंग मीनिंग इनसाइड योर हेड. एग्जिस्ट ओनली एज मूवमेंट, नॉट एज स्टेबल आर्टिफैक्ट. एग्जिस्ट ओनली एज अ मूवमेंट, कि लाइक मूवमेंट के तौर पे वो चल रहा है. ठीक है. ऐसे फ्लक्स में है चीज़. ठीक है. विद मीनिंग के साथ. ठीक है. कोई स्टेबल नहीं है जैसे कोई आर्ट होती है. ठीक है. नॉट स्टेबल एज आर्ट. ठीक है. नॉट स्टेबल एज आर्ट. नॉट स्टेबल एज आर्ट. फिलोसफिकल डायमेंशन की बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म सीक्स मीनिंग थ्रू सिस्टम लाइक लैंग्वेज. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डिस्टर्ब स्टेबल मीनिंग. ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म होता है वो क्या करता है, वो मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता है थ्रू सिस्टम. सिस्टम लाइक कैसा? सिस्टम लाइक लैंग्वेज. ठीक है. इफ़ आई टॉक अबाउट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये है कि डिस्ट्रस्ट स्टेबल मीनिंग, कि आपका जो भी मीनिंग है वो स्टेबल नहीं है. ठीक है. और उसका कोई एंडिंग नहीं है. ओपन्स अप इंटरप्रिटेशंस,
कि एज कोई मीनिंग नहीं है और मीनिंग कंटिन्यू शिफ्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। जैसे एक बड़ा अच्छा है वो एनालॉजी, एरो, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अभी बता देता हूँ सो एज आई कैन कनेक्ट। इट इज़ कॉल्ड एज समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग, I made a video about this. Yes, I remember. It is by Leon. No, no Leon. Um, it is by. I'm forgetting. I'm forgetting. How can I forget? Okay, so the point is. Wait. It's called. Yeah, Zeno's paradox. So structuralism जो है वो बोलता है कि लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम मीनिंग ढूंढते हैं। अगर हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें, इट टॉक्स अबाउट ज़ीनोस पैराडॉक्स। Zeno's paradox. So Zeno paradox talks about that if somebody is throwing an arrow on a dart and trying to hit a bullseye, when an arrow is going midair, uh, it keeps on changing position. But when but in the due course of uh, going from point A to point B, it it is stable at every point, but every second, every millisecond it is moving, but that stableness is uh, is fixed, and that fixedness, the act of fixedness is called as structuralism. And if it's going every millisecond into 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, so it's like a due course of time, like this. Okay, so this is structuralism, and this is a deconstruction, like from here. Okay, so this is deconstruction. I don't know if I'm able to explain you via this method. So the text is always plural. So what is plural? Singular, plural, multiple meanings, readily produced, exist only as movement, not as stable artifact, कि हमेशा ही मूव कर रहा है, एक स्टेबल आर्ट की तरह नहीं है. Text becomes a web. Text, for example, text is always textus. What is textus? Textus. Text. Epistemology. द वर्ड टेक्स्ट. अच्छा, अब जो टेक्स्ट के बारे में, ये क्या चीज़ है, ठीक है. जो शब्द है टेक्स्ट वो ओरिजिनेट हुआ है बाय द गाय कॉल्ड एज मार्कस, नॉट ऑरेलियस, मार्कस फेबियस. इट इज़ कॉल्ड एज Quintilius. Okay, he was a Roman educator and a prehistoric rhetoric, not prehistoric, born in Hispania, widely refers in the widely referred in the medieval school of Renaissance writing. In English translation, he is referred as
ये एक वो बंदा जिसने सिर के ऊपर पत्ते लगाए हैं, बस यार ज़्यादा नहीं याद रखना. Okay, always interconnected. Why it is so important? सो रोनल्ड बार्ट्स बोलता है शिफ्ट फ्रॉम वर्ड टू टेक्स्ट. वर्ड बहुत ज़्यादा पैसिविटी, फॉर एग्जांपल वीडियो वॉचिंग इज पैसिविटी. डीकंस्ट्रक्शन हायरार्की इन लिटरेचर एंड कल्चर एम्पावर्स रीडर टू इंटरप्रिटेट प्ले एंड रेजिस्ट एंड अथॉरिटी. कि आप बोल रहे हो ये सही नहीं है ना, ये तो मेरे बिलीफ के साथ मैच नहीं करता. सो इट्स लाइक अ आर्गूमेंट विद द ऑथर एंड इट्स लाइक अ फाइट. काफ़ी मज़ा आता है. And influence postmodernism, media theory, semantics, feminism, and cultural studies. The work is what we consume. The work is what we consume, and text is what we create. Okay, so I hope आपको अच्छा लगा हो. Thanks.